Okay children, now it's time to do the most important part for the object drawing of our Maharashtra State Board Elementary Intermediate Examination, and that is the bucket. Okay, so now when I am teaching you all how to make a bucket with size, okay, with measurement, most super drawing. Okay, so you have to make a huge bucket. If you make small buckets, you all are not going to get any marks. So see, the measurement of this is 8. I'm taking 8 here. Can you see this? I've taken 8. Okay, then you take into 100 degree. For the bucket you take 100 degree, and for the kachre ka dabba you take, this is 100 degree from here and 100 degree for here. See, no teacher will show you all how to do it with measurements. I am teaching you all, तो तुम लोग है ना उसका खुलासा मत करना. मैंने एक bucket बनाई, बड़ी गंदी सी बनी. Okay, now you're going to take 12 centimeters here. Can you see this? 12 centimeters, and this is the dot, this is 12. So we take, see, if you get a bucket which is a little elongated, you can take 15. It depends upon what type of a bucket you get, but the angle and the base remains the same. This is a little smaller bucket. If you get a little elongated bucket, you have to do it accordingly. Now you will close it. Now what we have made is nothing but the skeleton. Okay, we have just made the skeleton of the bucket. Now what will you do is, I'll show you with entire measurement. Now you will take 1.5 centimeters here, it is 1.5 centimeters here, and it will be equal to 3 here. Okay, so I have taken 1.5 plus 1.5. Now from here, what I'm going to do is, I'm going to jump here, take a turn. You can use multiple lines, okay, and then I have to come to this point. I'm going to rub a lot. I'm going to rub a lot in between. अभी ये करने के बाद ये हमारे को एक टाइप फिगर मिल गया. अभी ये है ना, हमको एकदम पतला सा डबली लाइन करनी है अंदर. Okay, this, take a turn, come here. Okay, this. Now you go down, go do 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 do. ऐसे गोल किया. अभी इधर से हमको ऐसे बाहर आना है, बाहर आना है, and now you make a doubly one here. Okay, you make the doubly line. Now this is also not flat, it is like that gulai mein. So you make this gulai here, then you take one step down, again you do the doubly part. Okay, now you make the ditchkiyaun either like a tunnel, and you come here. Now there are certain parts which are required to be rubbed. Okay, so you'll take your rubber. Now I'll tell you what parts are to be rubbed. This line, the skeleton which we made initially, our reference lines have to be rubbed. Okay, this is our reference lines which is rubbed. We have got almost the shape of the bucket. Now what we need to do is make a square here. Okay, make a chanda mama here, because this is from where. Now listen very carefully. कहाँ पर भी अगर तुम्हारा हैंडल इधर से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है, never mind, you started from here. Now you take this down here, take a turn and come here. Now from here you take it down, 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 and you bring it here. Yeah. Okay, so this is the mota wala handle. If you get the patlu wala handle, then you have to make it accordingly. I think so this part is a little small for it, so let me do it a little jadiya. I have made the jhada handle which comes in the buckets nowadays. Okay, nowadays it is a jhada handle, sometimes it's a patla handle. I am doing the jhada wala handle, and I am making a blue bucket. Now whenever you have to make a bucket, the first thing what you're supposed to use is your white color. Whichever color bucket you get, first you have to use your white color. Now white color is to be used where? You remember this part which we did, the circular part? तो इधर हम लोगों को ना ऐसे दबा दबा के white कर देने का पहले. Okay, this is the part which requires to be done white. Okay, अभी ये जो हैंडल है, ये हैंडल के ऊपर का पार्ट पे हम लोग थोड़ा सा वाइट घसेंगे. It is a requirement, that is why. और रख देंगे. अभी तुमको कुछ दिख रहा नहीं है, but still I am telling you. Now we have our cerulean blue children, a light blue and a white color. Okay,
we are doing a blue bucket. So what we do is we take a cerulean blue from here. See, this is the gulai which we did, right? इधर cerulean blue हम लोग इतना कर देंगे, इतना cerulean blue करेंगे. दबाना है कलर को, अच्छे से गुली गुली करना है, पहले बॉर्डर करके उसके बाद you will do this part nicely. दबाओ थोड़ा सा कलर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट चिल्ड्रन. कुछ नहीं हुआ तो बकेट को तो हम लोग प्रैक्टिस करना. अगर बकेट तुमको आ गई तो तुमको कचरे का डब्बा तो अपने आप आ जाएगा. कचरे का डब्बा इज़ मोर सिंपल. दिस इज़ नॉट देयर एंड द हैंडल इज़ नॉट देयर. आई डू द कचरे का डब्बा टू. आई हैव डन इट एग्जैक्टली विथ वन ब्रूम ऑल्सो एंड समथिंग आई हैड मेड हियर, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव डन दैट. नाउ व्हाट यू टेक इज़ योर लाइट ब्लू कलर चिल्ड्रन, और इधर तक हम लोग को लाइट ब्लू करना है. ओके, I'll teach her part by part, so don't you worry. ये लाइट ब्लू किया हमने इधर. अच्छा, अभी बीच में हमको थोड़ा सा वाइट की जगह छोड़नी है और इधर भी हमको हल्का सा वाइट लाइट ब्लू करना है. ठीक है, अभी तुम्हारे पास कहाँ गया हमारा वाइट? अभी इधर वाइट आएगा. अभी मेरा वाइट गुम हो गया यार, क्या करती हूँ मैं, इधर उधर ही रख देती हूँ, समझ ही नहीं आता. हाँ, इधर मिल गया मेरे को वाइट. तो ये वाइट को गुली 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 करते हुए ऐसे कर देने का. अभी आई एम नॉट स्मजिंग चिल्ड्रन, आई विल डू द एंटायर स्मजिंग टुगेदर. आई एम नॉट डूइंग दिस राइट अवे, आई विल डू इट लेटर ऑन. तो भी मैंने करीच दिया है, पता नहीं मेरे में क्या प्रॉब्लम आई, मैं करीच देती हूँ. सो दिस पार्ट इज डन. नाउ वील कम डाउन टू द बकेट. दिस पार्ट इज रिमेनिंग. वील डू दिस पार्ट. So when you're doing this part, see that whenever you're doing your bucket from here, इधर हम लोगों का ऐसे आएगा. हम लोग ये करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को कर देते हैं. लाइट ब्लू करना है हैंडल को, सो हम लोग ये हैंडल को फुल लाइट ब्लू कर ही देते हैं. नहीं तो क्या होएगा पता है, ये हमने ऊपर थोड़ा सा उसको हैंडल पे इधर वाइट किया था ना, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है. When you're doing it outside, be careful. So we have done the handle first. Now you take your cerulean blue. I have done the border. Now you quickly घसाओ the cerulean blue इधर. Use good quality colors, children. If you do not use good quality colors, the blending will not happen properly. And when the blending does not happen properly, you feel little depressed. I don't know, I feel depressed. मैंने इससे पहले एक बाल्टी बनाई थी, उसकी ब्लेंडिंग मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वापस, मैंने कैरोगेटेड बॉक्स भी मैंने 2x4 का बनाया था, तो वो फिर वैसा लग रहा नहीं था ना जैसे बुक में, तो मैंने वापस बनाया. सो एंड आई कैन डू इट वापस वेस्टिंग माई पेजेस एंड माई एनर्जी एंड माई टूटेला हैंड. तो यू कैन ऑल्सो डू इट. My hand is not tutela, but it is paining. I tried to do my corrugated box without this because ना यहाँ इधर से पट्टी गंदी हो जाती है, but then it was paining, so I decided let me put it back and then do it. I'll wash the patta. No problem. So I have done my cerulean blue color now. Now what am I going to do is this much is my light blue color. और इधर से देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा पिचू पिचू निकलेगा ना, उसको ऐसे ऐसे करके निकाल देना. Now when you're doing this, see to that there is no खर. This is the most important part children. पेंटिंग से करोगे ना यार, पगला जाओगे. मैं बोल रही हूँ पगला जाओगे, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही. पेंटिंग में पगला जाता है इंसान. सी दिस मच विल बी योर लाइट ब्लू. जो ऐसे उसकी मुच्छी दाढ़ी निकल कहाँ चली गई पता नहीं, उसको है ना निकालते ही रहने का मुच्छी दाढ़ी को, नहीं तो अच्छे से नहीं होता. Now I am not smudged it yet, but I am going to smudge it later on. So first let us do this part completely and then I'll show you the smudging part. Now I take my white children, और जो बाकी का पार्ट है उस पर मैं वाइट घस देती हूँ. ओके, देखो समझ लो, तुम्हारी बाल्टी वाइट नहीं है, तुम्हारी बाल्टी है ब्लू. नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वाइट का ही सबसे बड़ा पार्ट लेते हैं. अभी ये पार्ट और ये पार्ट बच गया. अभी ये पार्ट में ऊपर उजाला होएगा, नीचे अंधेरा होएगा. इसमें ऊपर अंधेरा होएगा, नीचे उजाला होएगा, इतना याद रखना. सो हम लोग का सेरुलियम ब्लू लिया,
follow instructions very nicely. It is a very soap drawing. Practice makes you perfect. ऊपर लाइट ब्लू कर दिया. अभी तक हमने परेशान ब्लू जो कलर हमने बाल्टी के लिए लिया यूज़ नहीं किया है. शो यू वेयर द परेशान ब्लू इज़ टू बी यूज्ड. अभी नीचे होएगा इधर डार्क. एक तो है ना ये ऐसे मोटे मोटे कलर्स होते हैं ना, मुझे ही नहीं समझता किधर से क्या हो रहा है. See, I have just used 3 colors, that is a cerulean blue, light blue and white till now. I am going to use Parishan blue, but that will be for the shadow areas. So this is your light blue color. Okay, उल्टा पुल्टा, इधर डार्क इधर ऐसे, इधर ऐसे इधर ऐसे, समझ गए ना, उल्टा पुल्टा. बाल्टी इस पूरा उल्टा पुल्टा. ठीक है. अभी हम लोग को शेडिंग स्टार्ट करनी है. तो शेडिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट शेडेड. ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट दिस. ओ माय. अभी ये जो है ना पार्ट, इसको भी हमको ये लाइट ब्लू करना है. ठीक है. ये जो हम लोगों ने बक्सा नहीं बनाया था इधर, बाल्टी का हैंडल जहाँ से निकल रहा है उसको अभी मैं तुमको बताऊंगी कैसे करने का. नाउ व्हेन यू गो यू कैन सी दीज 2 डिफरेंट पार्ट्स, द cerulean blue and this. I tell you, if you use the brilliant blue, it is also going to look very nice instead of cerulean. ओके, ब्रिलियंट. ओ माय गॉड, ये उखड़ रहा है मेरा आज कलर. उसमें भी पहले भी मैंने जो बनाया था ना उसमें भी उखड़ रहा था. दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड. सो आई डू इट विथ कलर्स इंस्टेड ऑफ हैंड बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग विथ माई हैंड. शायद वो नाराज़ हो गया मेरे हाथ से. सो आई एम जस्ट डूइंग द शेडिंग. समटाइम्स सेरुलियम ब्लू को लाइट ब्लू के घर में घुसा दो, कभी लाइट ब्लू को सेरुलियम ब्लू के घर में घुसा दो और ऐसे शेडिंग करो. ठीक है. अब ये लाइट ब्लू से शेडिंग आई एम डूइंग इट विथ कलर्स बिकॉज इफ आई एम यूजिंग माई हैंड इट इज़ कमिंग आउट, द कलर इज कमिंग आउट. इट हैपन्स समटाइम्स. नाउ आई टेक माई white and do a little bit of gully. Then I take my little light blue and do a little gully in this white. Okay, you just need to shade it and merge it in a very nice manner so that it all starts looking very pretty. Okay, if you feel ऐसा तो थोड़ा सा you can just remove a little, you can just scrape a little white and it will happen. Okay, it's not at all difficult. Now comes the role of a Prishan blue. हमारा प्रशान ब्लू बेचारा परेशान है कि तनु आंटी ने अभी तक मैनू यूज़ ही नहीं किया. आई शो यू व्हाट इज़ टू बी डन विद द परेशान ब्लू. नाउ दिस इज़ अ परेशान ब्लू. करेक्ट चिल्ड्रन. या बिफोर यूजिंग द परेशान, अरे करूँगी यार देखो भी यूज़. व्हाट वी डू इज़ वी डू अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू दिस साइड, upside. Now we use the scraping technique just to scrape. We had done white initially, so it will get scraped very nicely. Can you see? Now you need not scrape it completely, just scrape it a little part. This is the shiny part. Okay, this is the shiny part. Now you have your Parishan blue. See, I have my Parishan blue in my hand, so I'm just putting a little Parishan blue here at this corner because this is the dark hand side corner. Now I put the Parishan blue. Now this is the shadow area, correct? See, this is the shadow area. So इधर हमने परेशान ब्लू डाला. अभी ये जो हम लोगों ने ये जो स्क्वायर बनाया था उसका भी ये शेडो एरिया है, करेक्ट. अच्छा, ये जो स्क्वायर बनाया था उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, करेक्ट. समझो और फिर करना. अभी ये जो हमारा हैंडल है उसके नीचे भी तो आएगा ना शेडो एरिया. So very slowly you do the shadow area here, but the shadow area will not come outside the balti here. Here it will be just plain here. Okay, and then you smudge it a little bit. Don't smudge it too much, just smudge it a little bit. See, my colors. ओके, नाउ तुमको पता है हमने इधर भी थोड़ा सा वाइट किया था. सी, आई एम यूजिंग अ स्केल टुडे बिकॉज माई नाखून इज़ नॉट सपोर्टिंग मी. सो आई एम जस्ट स्क्रेपिंग अ पार्ट ऑफ दिस हैंडल. वी हैड डन इट वाइट इनिशियली, यू रिमेंबर. उसको हम लोग ने हल्का सा स्क्रेप करके वाइटनेस में डाल दिया. अब ये हैंडल लग रहा है. नाउ यू कैन अगेन यूज़ योर लाइट ब्लू कलर. आई डोंट नो वेयर इट इज़ गॉन, गुम हो गया. ऐसा ही होता नहीं. आई कुड सी इट. And then you put the light blue again. Okay, so that only a little part can be seen. I can do scraping better with my fingers rather than any other instrument. Okay, so ये बाल्टी के ऊपर का पार्ट हो गया.
ये बाल्टी का हैंडल ब्लू हो गया और ये शैडो पार्ट हो गया. नाउ अगेन आई एम यूजिंग माई परेशान ब्लू over here for the shadow part. Correct, this is the shadow part, this is the shadow part. The shadow will continue here, it will be dark here. Just check out here. Okay, keep on rolling your color in such a way that it starts looking beautiful. It might take a little time, but you all have ample amount of time. देखो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में मेरी बाल्टी हो गई है, इतना भी टाइम नहीं लगा है मेरे को. 20 मिनट में तो हो ही गई है मेरी बाल्टी ना. इधर थोड़ा सा वाकड़ू हुआ है तो इधर मैं क्लियर. सी एवरी पार्ट यू हैव टू चेक बिफोर यू गो अहेड. एवरी पार्ट नीड्स टू बी चेक. अभी आप बाल्टी सी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट दिस पार्ट लाइक दैट, द शाइनी पार्ट, scrape it and put it and just merge it because I don't like it to be very dark. This is scraped, this is scraped. I am using the cerulean blue here. You can use the Antwerp blue also. अभी इधर सिर्फ मैं थोड़ा सा स्क्रेपिंग करके उखाड़ रही हूँ कलर. ओके, so this is done, this is done. You want, you can just scrape a bit of white here, or you can redo your white here to show a little bit of shine. Okay, so this is the way your bucket needs to be done. And now you have to do the shadow. Okay, so when you do the shadow, the part which is touching the ground has to be black, the tunnel is to be black, and this part, correct? And now you'll use your gray color for this. See, this is because of my patta. Can you see? So this has become blue here, but you put a napkin here and do it, children. You have to be very careful when you do this and you do the shadow. That is why I was trying to avoid, but then my hands pain without this, so I have worn it back again. See, wherever you feel there has to be a little bit of darkness, please put a little bit of darkness there. Smudge your colors well. Take good amount of time. The time is there with you. I have shown you the measurement, so you all will not be worrying about the entire what do you call measure, मतलब structure के लिए you all need not worry because I have told you the sizes, but you all will have to worry for what is only one thing is your coloring. See, इधर थोड़ा सा हुआ. Be careful, keep on doing it till you get that finished product and till you are satisfied, yes, it is done well. Okay, so you have to keep on performing till you are satisfied that your baltis come proper. It's an easy way to do a balti. This is the external part, this is the internal part. Don't you worry, keep doing till you get the best results. Smudge it well, that is the most important part. Okay, so my balti is done. You all do make a balti and show me. Okay, bye bye.